Okay, so recording has started. Everyone, please put your attendance, put your name in the chat box. सगळ्यांनी आपलं नाव लिहायचं chat box मध्ये so that your attendance will be marked. And if your attendance is less than 80%, so it will be little difficult for you. All right, so I think we have 5 students and we are good to go. So let me just join from another account. Okay. Hello. I have shared my screen. I hope my screen is visible. Please confirm that my screen is visible, right? Yes, sir. Okay. Okay. So students, I think there are few new students here, and I had a talk with them as well. Nikita and Sheetal, I think we had a talk. Okay. So when I ask any questions, you just have to put your answers in the chat box only, unless I ask you to turn on your mic. Okay. सो जेव्हा मी तुम्हाला सांगेल की माईक ऑन करा, तेव्हा सगळ्यांनी किंवा कोणीही माईक ऑन करायचे. अ, त्या व्यतिरिक्त फक्त तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये आन्सर्स द्यायचेत. ओके. चला ठीक आहे. सो we are going to start our new chapter. I think a few people are new and they might have missed a lot of syllabus. So I just wanted to know, uh, okay, I know a few people because Vedant, Ayush, and Kadambari are old students. Uh, but there are two new students. So I just wanted to know your medium of learning. मतलब आप are you from semi English or Marathi medium? Just put in the chat box, both of you. Put in the chat box whether are you from English medium or Marathi medium. Okay. So Karemure is from English, semi English, and what about you, Sheetal? Do you know how to use chat box? Same English, perfect. So I can use English, right? So I can use English, Marathi, and Hindi. Perfect. So let's start with our class. So our chapter is financial planning. So first of all, we'll see uh, introduction to financial planning. मतलब exactly financial planning होता क्या है? After that, we have tax structure. After that, savings and investments, and then computation of income tax. मतलब ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने सुनी रहेगी कि सेविंग्स हुआ या फिर इन्वेस्टमेंट्स या फिर टैक्स या फिर इनकम टैक्स, ये सारे टर्म्स आपने सुना होगा, राइट? सो हाउ दिस थिंग्स वर्क दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हमें सीखना है कि ये सब चीजें किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है या फिर ये चीजें क्या होती क्या है. ओके. So first of all, we need to understand why financial planning is necessary. Okay. So यहाँ पे हमें एक dialogue दिया गया है जो कि we have to understand. See, here we have a picture of computer, and here there is one student or one girl whose name is Anagha, and she is asking to her mother that shall we buy a computer. उसके मदर को वो क्या कह रही है कि हमें एक कंप्यूटर खरीदना चाहिए. सो हर मदर सेज ओके, लेट्स बाय इट नेक्स्ट ईयर. मतलब उसकी मदर कह रही है कि हमें उसे अगले साल खरीदना पड़ेगा, राइट? देन अनघा सेज मामा व्हाई नॉट नाउ. अभी होता है ना कि बच्चों को मतलब आप लोगों को भी मतलब कोई चीज अगर खरीदना है तो आपको जल्दी होता है कि लाइक हमें जल्द से जल्द खरीदना चाहिए, लेकिन आपके पापा मम्मी जो है वो बोलते हैं कि 8 दिन बाद खरीदेंगे या फिर 15 दिन बाद खरीदेंगे, राइट? सो लाइक दैट. सो अनघा वांटेड टू नो कि वाई वी कैन नॉट परचेस इट नाउ, मतलब अब हम उसे अभी क्यों नहीं खरीद सकते. सो अनघा की मम्मी कहती है कि यू डोंट नो हाउ एक्सपेंसिव इट इज, मतलब ये बहुत महंगा आता है, राइट? सो अगर आप कंप्यूटर नया खरीदने ले जाते हो तो इट इज अराउंड 25-30,000, विच इज अ बिग अमाउंट, इजंट इट? सो अनघा सेज यू मीन वी विल हैव टू सेव फॉर इट, राइट? सो अनघा कहती है कि मम्मी हमें कंप्यूटर लेने के लिए सेव करना पड़ेगा पैसा, राइट? मतलब हम हर महीना कुछ ना कुछ सेव करेंगे सो दैट we can purchase the new computer, right? So mother says yes, that's the thing, मतलब हमें सेव करना होता है. So we often hear such conversations. So ऐसे conversations कई कई बार हमने देखे हैं, सुने हैं, या फिर we have been part of those conversations, right? So everyone requires money
to meet a variety of needs. So we all know that we need money. Okay, money is the primary thing that we need. मतलब हमें कुछ भी करना है, so हमें पैसों की जरूरत होती है. So that is why after spending on necessities of the present, everyone tries to save money to make provisions for the future needs. मतलब सी वी नीड मनी, सो दैट्स व्हाई हमारे जो बेसिक नीड्स है वो बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए भी हमें मनी की जरूरत पड़ती है. लाइक अवर क्लोथिंग इज देयर, अवर फूड इज देयर, राइट, एंड अदर एक्सेसरीज. सो ये हमारी बेसिक नीड्स है. सो इन पे स्पेंड करने के बाद में जो मनी बचता है, सो वी हैव टू सेव दैट मनी. व्हाई वी हैव टू सेव दैट मनी? वी हैव टू सेव दैट मनी फॉर द फ्यूचर नीड्स. मतलब हमें भविष्य में भी उसकी जरूरत पड़ने वाली है पैसों की, राइट? सो दैट इज व्हाट वी कॉल सेविंग मनी. So in order to protect our savings or even make them grow, we keep them as a fixed deposits or buy immovable properties such as house, land, etc. That is what we called investment. Okay, so see, सबसे पहली चीज तो क्या है कि सेविंग. सेविंग मीन्स व्हाट? आफ्टर स्पेंडिंग ऑन बेसिक नीड्स, मतलब हमारा जो हमारी जो जरूरतें हैं उन पे खर्च होने के बाद में जो मनी हम बचाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेविंग. एंड इस जो हमारे पास जो सेविंग्स है, राइट, सो either we have to keep them as a fixed deposit or we have to buy property with that money. मतलब क्या कि फिक्स डिपॉजिट नाम का टर्म आपने सुना होगा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट अ फिक्स डिपॉजिट्स? फिक्स डिपॉजिट्स का नाम सुना है, बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट रहता है. You have idea? I need answers in the chat box from everyone. Have you heard about it, fixed deposits? Okay, so Kadambari has heard, Ayush has heard about it. What about others? बाकी लोगों ने नहीं सुना है क्या? या फिर you don't want to answer? Is it like so? Okay, so Karemore, I think your name is something different. Can you please put your first name, the student who's logged in with Nikita Karemore? I just forgot your name. Snehal. Okay, fine. Sorry, Snehal. Okay, so Snehal hasn't heard about it. So no issues. See, fixed deposit मतलब क्या कि let us suppose I have some money. Okay, so I have, let us suppose 100 rupees, एंड मुझे उस 100 रुपीज की अभी जरूरत नहीं है. ओके, मतलब फिक्स डिपॉजिट इतने कम पैसों से नहीं होता है, लेकिन वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. ओके, तो अभी मुझे उस 100 रुपीज की जरूरत नहीं है, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव दैट मनी टू बैंक. मतलब मैं बैंक में रख दूंगा 10 साल के लिए या फिर 15 साल के लिए, 20 साल के लिए. ओके, मतलब मैंने फिक्स इस ड्यूरेशन के लिए वो पैसे मैंने बैंक में डाल दिए, राइट? सो व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 years, 15 years, I will get my 100 rupees back as well as इंटरेस्ट. मतलब जो व्याज ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो, राईट? सो बँक काय करेल की माझे जे 100 रुपीज आहेत ते तर मला परत करेलच, पण जे 10 वर्षांचं किंवा 15 वर्षांचं व्याज आहे ते पण आपल्याला परत ते करतात बँकवाले. दॅट इज फिक्स्ड डिपॉझिट. ओके, सो सेकंड थिंग इज बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज हाऊस, लँड, एटसेट्रा. ओके, सो सेकंड ऑप्शन काय आहे माझ्याकडे? आयदर आय कॅन कीप इट एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट और द सेकंड थिंग इज आई कैन बाय अ इमूवेबल प्रॉपर्टी. मतलब कोई भी ऐसी चीज, या इट इज लाइक दैट, स्नेहल, राइट? So I can buy a property as well. So that is, so these things are called investment. Whether I'm keeping it as a deposit or whether I'm purchasing something, I'm buying something, so it is called as investment. So every investor first spends the amount required to meet primary necessities and saves the remaining amount. One also uses savings to make a carefully considered investments. This is called as financial planning. The main purpose of financial planning is protection and growth of wealth. Okay, so financial planning is useful for making provisions for predictable and unpredictable expenses that each of us has to meet in our life, right? So see, investor किसे बोला जाता है कि जो इंसान इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सो दैट इज इन्वेस्टर. सो एवरी इन्वेस्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल, ही और शी हैज टू स्पेंड मनी ऑन नेसेसिटीज और बेसिक नेसेसिटीज, प्राइमरी नेसेसिटीज, मतलब जो हमारी रोजमर्रा की जरूरत है, राइट? सो उस पे खर्च करने के बाद में
कुछ पैसा बचता है उसे द इन्वेस्टर इन्वेस्ट्स एंड दे हैव टू मेक फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब उनको प्लान करना पड़ेगा ना कि लेट अस सपोज अभी मुझे महीने का 500 रुपये मिल रहा है, राइट। सो 500 रुपये में से मेरी बेसिक नीड्स कितनी है, सो लेट अस सपोज मेरी बेसिक नीड्स है 200 रुपये, राइट। सो आई हैव 300 रुपीज, 300 रुपये मेरा बच रहा है। सो आई हैव टू प्लान हाउ आई शुड यूज दिस 300 रुपीज, मतलब मुझे फिक्स डिपॉजिट में कितना रखना है, या फिर आई हैव टू बाय अ प्रॉपर्टी और समथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन टू फैक्टर्स, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। सो फर्स्ट वन इज predictable expenses, second one is अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रेडिक्टेबल मतलब कि वी कैन और वी नो दैट एक्सपेंसेस, मतलब हमें पहले से पता होता है कि इस चीज के लिए हमें पैसा लगने वाला है, सो दैट इज प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस, ओके। एंड अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस आर कि हमें अंदाजा नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी हमें उस जगह पे पैसा लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल नाउ, प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर देम। सो अभी आपको पता है कि लाइक आप 9th से 10th में जाते हो, या फिर 10th में से कॉलेज में जाते हो, सो यू नो दैट कि यू हैव टू पे सर्टेन फीस, राइट। आपको नया हो सकता है नया यूनिफॉर्म खरीदना पड़े, नोटबुक्स, बुक्स, आफ्टर दैट ऑल द स्टेशनरी थिंग एंड कॉलेज फीस और स्कूल फीस। सो ये सब प्रेडिक्टेबल है, मतलब आपको पहले से पता है कि वी हैव टू पे दैट, राइट। सो वी कैन प्लान दैट। सेकेंड थिंग इज कैपिटल फॉर अ प्रोफेशन और बिजनेस, मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर कोई मतलब आप जो काम करते हैं, तो वी नो दैट कि आई हैव टू इन्वेस्ट और आई नीड दिस मच मनी, हमें इस इतने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। और बाइंग अ व्हीकल, दिस इज आल्सो अ प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस, मतलब कि लेट अस सपोज यू हैव टू purchase a car, right? So you know that which car I am going to purchase, right? So उसके लिए मुझे 2 लाख लगेगा, या फिर 4 लाख, या फिर 10 लाख। So you can predict that as well. Next thing is buying or बिल्डिंग अ हाउस। सो हम हाउस बाय करते हैं या फिर बिल्ड करते हैं, सो उसमें वी नो दैट कि वी आर गोना नीड मनी, सो वी कैन प्रेडिक्ट दैट, राइट। एंड द लास्ट वन इज ओल्ड एज रिक्वायरमेंट्स, मतलब बुढ़ापे के लिए भी यूजुअली वी रिटायर एंड वी नीड सम मनी फॉर टू बियर आवर primary expenses, right? So we know that we are going to need money in our old age, right? So these are predictable expenses. Now what are unpredictable expenses? Unpredictable expenses are first of all natural disasters, okay। so मतलब अगर मान लो कि कोई natural disaster आता है, so natural disaster is like it may be earthquake or tsunami or any kind of, okay। so let us suppose there is earthquake, so we cannot predict कि मतलब earthquake कब हो सकता है, okay। and when there is earthquake there is a lot of loss, मतलब जान का भी लॉस होता है, या फिर जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका भी लॉस होता है, मकान वगैरह थोड़ा सा खराब होते हैं ना। सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट, बट वी विल नीड एक्सपेंसेस इन दोज टाइम्स। आफ्टर दैट मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर अ फैमिली मेंबर, राइट। मतलब हमारे घर में कौन कब बीमार पड़ जाए, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट, बट अगर ऐसा कुछ होता है, सो वी नीड टू pay money to the hospitals, right? So this is unpredictable expense. Next one is loss due to an accident. So accident यानी कि अगर कुछ accident होता है, so we cannot predict accidents, right? So that is why they are called accidents. They just happen what we can say randomly or unexpectedly, so that is accident. सो एक्सीडेंट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसमें भी हमें पैसा लगता है। एंड देन वी हैव सडन डेथ, ओके। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में कुछ किसी का सडन डिमाइज हो जाए, सो इन दैट केस these are the things we cannot predict, and these are the categories that comes under unpredictable expenses, okay। so I hope it is clear for you ki what is predictable expenses and what is unpredictable expenses, and we have to plan according to this only, right? So let me read the next paragraph. Okay, fine, thanks Nehal for confirming. ठीक है, so the above considerations make it quite clear why financial planning is must. However, some important points must be kept in mind as we plan our finances. So the point is, let us suppose we have income of 500 rupees per month, so we have to plan accordingly
कि these are the basic necessities, मुझे basic necessities के लिए या फिर primary requirements के लिए इतना पैसा चाहिए. After that, for predictable expenses, I'm gonna keep this one. मतलब मैं this much, इतना पैसा मैं predictable expenses के लिए रखूंगा या फिर रखूंगी. And this much amount of money I am going to save for unpredictable expenses. Okay, so we have to plan that accordingly. All right, so next we have savings. Okay, so I want one of you to read first paragraph and second and third and fourth and fifth, like that. So who is gonna read first? Who wants to read this first paragraph? It's a big one. Okay, as expected, it is Kadambari. Okay, anybody else is interested? Kadambari, just a second. Wait for a second. You have to read. I know you want to read and you will read. Anybody else want to take the chance and read this paragraph? And don't worry, it is okay if you make mistakes. I always say that, right? Okay, nobody. Let's go, Kadambari. Kadambari first. Kadambari, you can read. Sorry, yeah, Okay, sir. It is for our yeah. it is for our own benefit to keep our savings safe and to make them grow. Our savings remain safe in a bank or in a post office. Money saved in a bank is also useful for cash money transfer transaction. This way, we do not have to carry large amount of cash or worry about losing it or getting it stolen. परफेक्ट सो फर्स्ट थिंग इज सेविंग्स की जब हम बात करते हैं, सो सेविंग्स में मनी को सेव करना एंड मेक देम ग्रो. So this is for our benefits and this is our responsibility as well, right? So our money or our savings can remain safe in banks or post office. Post office में भी हम money डाल सकते हैं, right? So जो हमारा money bank में है, I think somebody has mic on, is it? No, everybody is on mute. Perfect. Okay. So हमारा जो पैसा बैंक में रहता है, सो दैट कैन बी यूज्ड फॉर कैश माइनस ट्रांजेक्शन्स, और वी से इट एज अ कैशलेस ट्रांजेक्शन्स. मतलब जो ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं ना, अभी हम मतलब पहले तो नेट बैंकिंग था, अभी गूगल पे, फोन पे, ये जो यूपीआई एप्स आए हैं ना, सो दीज आर लाइक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड systems or applications, we can say that. But these are again comes under cashless or cash minus transactions, right? So what is advantage of using these applications or these facilities? So the advantage is this: so we don't have to carry large amount with us. So let us suppose I have to travel uh, 800 kilometers or 1,000 kilometers, right? So and I have to travel by train. Okay, and let us suppose I have to carry a big amount. So there is a risk of, like, we cannot predict, कुछ भी हो सकता है, right? So it can be stolen or anything can happen. There is a risk to carry large amount with us, right? But if we keep that money in the bank and we can just go there and withdraw it from there, so it is very safe, right? So this is the, what we can say, advantage of having money in the bank. There are disadvantages as well, but we will not discuss that right now. Okay, so who want to read the second paragraph? Anyone interested? Oh, perfect. Snehal, go ahead. Yes, sir. If the money we get or earn is in the form of cash and we keep it as it is without uh, in without investing it, its value diminish with time. For example, if today you can buy two pencil for 10 rupees, a few years hence you may be able to buy only one for that amount. Okay, very good. So, see, if we earn money
in the cash form and we keep it as it is without investing it, its value diminishes with time. So it is very important thing we have to understand. मतलब मान लो कि हमने कैश में पैसा कमाया and we are keeping it as it is, मतलब मुझे अभी फ्यूचर के लिए जरूरत है, let us suppose I have earned um, 10 rupees for example, okay, and I have spent 5 rupees and I have kept this 5 rupees cash as it is, okay. So after 1 year, 2 year or 3 year, so इट्स वैल्यू इज गोइंग टू डिमिनिश, मतलब उसकी जो कीमत है वो कम होने वाली है। सो इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे दिया गया कि फॉर एग्जांपल इफ टुडे यू कैन बाय 2 पेंसिल्स फॉर 10 रुपीज, राइट। सो 2 पेंसिल्स आप खरीद रहे हो 10 रुपए के लिए। सो कुछ साल बाद ये ऐसा हो सकता है कि फॉर दैट अमाउंट ओनली, मतलब 10 रुपए के लिए ही एक पेंसिल आ जाए, मतलब कि पेंसिल महंगी हो जाए। सो आपका जो पैसा जो है वो तो 10 रुपया ही रहेगा, लेकिन कुछ साल बाद उसमें व्हाट वी कैन से वी आर बाइंग लेस एक्सेसरीज और its value is diminishing basically, right? So that is the thing. So third paragraph, who wants to read? Anyone? Nobody? Okay, Kadambari again, but I want either Vedant or Sheetal to read this. Oh, sorry. It is Bhagyashri. Bhagyashri, you can read this. If the amount invested is used for expanding a business, to start an industry, or other such purposes, it contributes to the growth of the national production. Right. So see, जो let us suppose अभी मेरे पास जो पैसा बचा है, okay, so if I invest that money in an industry or an business, so eventually that money grows, okay, उससे and what we can say, what is the advantage of this investment? It it not only grows our money, मतलब हमें तो ज्यादा पैसा मिलता ही है, but it also contributes to the growth of national production, right? मतलब हमारे देश को भी इससे फायदा मिलता है और देश की जो जीडीपी हम जिसे कहते हैं, सो इट कंट्रीब्यूट्स टू दैट एज वेल। फोर्थ पॉइंट, if some part of the income is spent for socially useful cause, एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम इट इन द लॉन्ग रन, ओके, मतलब जो हम कमा रहे हैं, सो उसमें से कुछ पार्ट अगर हम सोशली यूजफुल कॉज के लिए स्पेंड करते हैं, सो इट कैन बी एनीथिंग। अभी सोशली यूजफुल कॉज, इट इज नॉट स्पेसिफिक, राइट? वी कैन डू एनीथिंग which is useful for society with our money, so that is going to help for everyone in the long run, right? After that, fifth point we have is, after spending on necessities, it is beneficial to limit spending on luxuries and to save instead for education, medical treatment, etc. So fifth point is very, very important. What it says, after spending on necessities, it is beneficial to limit spending on luxuries and to save instead for education, medical treatment, etc. So who is or who wants to explain this point to the class? सब लोगों को explain करना है। You can take your time, you can take your words, मतलब आप अपने खुद के words में इस points को समझा सकते हो to everyone. Who wants to volunteer? कौन समझाएगा कि fifth point का meaning क्या है? It is absolutely okay if you commit mistakes, okay, but it is not okay if you're not trying. Who wants to do this? अगर कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ रहा है, सो आई विल लेट यू नो। यू कैन आस्क मी, सर प्लीज टेल मी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। हु इज गोइंग टू ट्राई? नोबडी? नोबडी? ओके, नो प्रॉब्लम। सी, हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं या फिर नेसेसिटीज है, उस पे खर्च होने के बाद में वी हैव टू रिफ्रेन और वी हैव टू लिमिट आवर स्पेंडिंग on luxury items or luxuries. Now, what is luxuries? मतलब कि these are not basic necessities, okay, or these can be considered as add-ons, मतलब
एक्चुअल में उसकी जरूरत नहीं है, but we want that. So that can be called as luxury. Okay, so we can limit our expenses on luxuries, and we can save those money for education purpose or medical treatment purpose. Okay, so this is the thing, that this is the meaning of fifth point. So now we have a tree here, so you have to observe this tree, and you have to try and understand why this tree is there. And it has three branches. I hope you are able to read the names of three branches. Can you just name three branches? I will mark it here for you as well. So see, this is the first branch that is going here. This is the second branch, and this is the third branch. So can you write these three branches? दिख रहा है आपको? If not, so this is the tree which is what we can say depiction of investment. मतलब जो हम invest करते हैं ना, so what are the ways or what are the options we have? So that is shown by these branches. Okay, so first one is post office. Yeah, it's a post office. After that, we have private sector, and then we have third one, that is बैंक. Okay, so private sector में हम कहाँ कहाँ पे invest कर सकते हैं? We can invest in mutual funds, shares, insurance, या फिर savings होता है, या फिर pigmy accounts. Okay, after that we have NSS funds, bonds. So yeah, these are the options we have in private sector. So when we talk about banks, so bank में कौन से options है we for investments? It is recurring deposits or fixed deposits or saving account. So these are the options. After the post office, so post office में we have postal life insurance or salary account, or what is that? Senior citizen investment scheme. And again one we have, that is RD. It may be a recurring deposit. Okay, so these are the options we have in different sectors. So observe the above picture and don't worry about it, students, because we have in detail, like we have details about these all options in our chapter going further. Okay, so observe the above picture, which shows some modes of investments. Discuss them, find out other modes of investment, and write them in the blank spaces in the picture. Okay, so we have few blank spaces here as well. That means we have more options. So can you list few options? I can see there are few options missing here. So if you can tell what are the, okay, so let's forget about post office, private sector, and banks. Okay, you just have to tell me we can invest our money in this thing. मतलब किसी भी चीज में you can tell me. See, I'm giving you the freedom. Okay, not only these three parts. You can use your imagination and you can tell me. Let us suppose you have some X amount of money and you have to invest it. So where can you invest? और आप कहाँ पे पैसा invest कर सकते हो? What comes to your mind? At least one answer. And it's very easy. I think we have discussed this. Okay, हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया भी है. Can anybody recall? किसी को याद आ रहा है? कादम्बरी, वेदांत, भाग्यश्री. Okay, I will repeat the question. Okay, so see here we have a tree. It has three branches. It has few filled places and we few blank spaces, right? So blank spaces में हमें क्या करना है? We have to fill investment options या फिर the options that have not listed here, right? So जो options यहाँ पे listed नहीं है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं. So I'm asking you कि let us suppose you have some money and you want to invest it. So where will you invest? Okay, so let me just give you uh, one option. I will start a business. Okay, I will start a business. So that is my investment. What is your investment? You can say that I will purchase a car, I will purchase a bungalow.
You can say that these are again investments, right? Okay, so Kadambari is going to pursue land. Okay, she is going to pursue land. मतलब वो जमीन खरीदना चाहती है. Okay, so what about others? Snehal, Bhagyashree, Vedant, what will you purchase? Vedant, I remember you haven't answered a single question. Okay, मुझे सब याद रहता है. You just have put your name and after that you are just out of the class. I will purchase. Yeah, perfect. See this one. Bhagyashree. Bhagyashree says, I will purchase gold. That is also an investment. Very good. Snehal and Vedant, you have not answered this. Okay, so Snehal says she will purchase a car. Okay, so Vedant is not going to purchase anything. He is going to give us the money, right? He's going to give all the money to us. So we are going to invest in our um assets, right? Okay. Chalo. So next point is investments. So investments are of many types. Investors often favor institutions like banks and postal departments for investing their money because it is safe there. Right. There's a certain risk in investing in shares and mutual funds, etc. That is because this money is invested in a business or industry, and if that incurs a loss, the investor suffers the loss too. On the other hand, if it makes the profit, it is safe and there is the opportunity to get dividend too. So you might not have heard about share market or shares. Have you heard about it? मतलब हम हमारा इन्वेस्टमेंट अगर बैंक्स में करते हैं, सो बैंक में इट इज सेफ. ओके, आवर मनी इज गोइंग टू गो नोवेयर, मतलब हमारा पैसा वहीं पे रहेगा. बट द थिंग इज द इन्वेस्ट और द ग्रोथ इज वेरी स्लो देयर. ओके, मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, सो दैट इज योर बेनिफिट. नाउ few investors invest in shares and mutual funds. Okay, so shares, share market and mutual funds, these are nonetheless same things. Okay, there's a risk to invest money. So what exactly this means? So share. So let me just make you understand what exactly share market means. Okay, so let us suppose I have a company. Okay, I have a company and the evaluation of that company is, let us suppose 100 rupees. मतलब 100 rupees का ही एक company है. It is not possible. We are just taking the example hypothetically. Okay, so 100 rupees का एक company है. So what I will do is I need money. So instead of investing my 100 rupees, I will take 40 rupees from you guys. Okay, how many students are here? 1, 2, 3, 4. 4 students are there, right? So I will invest 60 rupees and I will take 10 rupees from all of you. मतलब Snehal, Bhagyashree, Kadambari, and Vedant. You will give me 10 rupees and we will form a company or we will have a company, right? So 100 rupees का company था, 60% share मेरा है, 10% आप लोगों का हर एक का है, right? So let us suppose now our company makes profit. ठीक है, हमारा कंपनी चल जाता है और we get profit. Okay, so let us suppose now evaluation of our company becomes 200 rupees. राइट, सो मुझे कितना पैसा मिलेगा? हाउ मच मनी आई विल गेट? हमारा कंपनी हमने स्टार्ट किया था 100 रुपए से एंड नाउ इट हैज बिकम 200 रुपीज, मतलब 200 रुपए का दुगना मुनाफा हुआ हमें, राइट? सो हाउ मच आई विल गेट? मैंने कितना इन्वेस्ट किया था? टेल मी हाउ मच आई हैड इन्वेस्टेड. नोबडी रिमेंबर्स? सी 100 रुपए का हमने या नो 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 नो, स्नेहल दैट इज इनकरेक्ट. हमने 100 रुपीज का कंपनी शुरू किया, राइट? उसमें से 60 मैंने पे किया और 10-10 रुपया मैंने आपसे लिया, मतलब 10-10-10-10 40 और 60 100 रुपए का बन गया कंपनी, राइट? सो अभी वो कंपनी अच्छे से चला एंड उसका जो एवेल्युएशन है, मतलब उसका जो प्रॉफिट है, वो मिला के हुआ 200 रुपए का कंपनी, राइट? मतलब वो कंपनी बड़ा हो गया. सो मैंने 60 रुपीज इन्वेस्ट किया था, राइट? तो कंपनी दुगना हुआ, मतलब मुझे मिलेगा 120 रुपीज, राइट?
और आप लोगों ने 10-10 रुपया किया था, तो आपको कितना मिलेगा? हाउ मेनी? आप में से हर एक को कितना रुपीज मिलेगा? 20-20 रुपीज मिलेगा। वेरी गुड भाग्यश्री एंड स्नेहल एंड कादम्बरी। ओके, सो आप लोगों को 20-20 रुपीज मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे कंपनी में प्रॉफिट हुआ है, राइट? हमारा कंपनी डबल हो चुका है। नाउ लेट अस सपोज हमने शुरू किया था कंपनी 100 रुपए से और हमारा कंपनी लॉस में चला गया। ओके, एंड अभी उसका जो एवेल्युएशन है वो रहता है 50 रुपीज का। सो हाउ मनी रुपीज यू विल गेट? आपको कितना मिलेगा? 100 रुपए का कंपनी था, 50% लॉस हुआ, 50 का हो गया। सो आप लोगों को कितना रुपया मिलेगा? 5 5 रुपीज। आई विल गेट 30 रुपीज, राइट? मतलब मेरा भी 50% का लॉस होगा ना, मैंने 60 इन्वेस्ट किया था लेकिन मुझे अभी 30 ही मिलेगा। सो दिस इज हाउ शेयर मार्केट वर्क्स। समझ रहे हो? नो, दिस इज अ बिग बिग थिंग। मतलब कि यस, कंपनी बहुत बड़ा बड़ा रहता है, उसका शेयर्स रहता है। सो अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है सो शेयर्स का प्राइस भी बढ़ता है। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड दो, इट इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। ओके, जितना मैं इजीली बता रहा हूँ ना, सो इतना इजी ये नहीं होता है, बट इट इज समवॉट लाइक दिस। ओके, सो दिस इज द, मतलब मैं सिंपलेस्ट वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ। सो इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा कंपनी। नॉट नहीं, आई डोंट डू दैट। ओके, I just have little knowledge of that, but I don't do that. Okay, so there's a risk. Okay, अगर कंपनी लॉस में जाता है, so we will incur loss, and if company makes profit, we will be in profit. Okay, so this is how share market works. Now, an investor must take 2 points into account when making an investment, namely the risk and the gain. So जब कभी भी we are going to invest in the share market, we have to take two things in consideration. First thing is risk and the second thing is gain. It is possible to make big gains by taking greater risks. However, it must be kept in mind that the greater risk can also lead to greater loss. Okay, so इस पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, सो यू हैव टू मेक श्योर कि व्हाट इज रिस्क एंड व्हाट इज गेन। मतलब मुझे कितना रिस्क है कि ये कंपनी, लेट अस सपोज आई एम इन्वेस्टिंग 100 रुपीज इन अ कंपनी। सो कितना रिस्क है कि मतलब मेरे 100 का 200 होगा या फिर मेरे 100 का 10 रुपीज होगा। सो अगर इस तरीके का कंपनी मतलब प्रॉफिट दे सकती है या फिर नुकसान करवा सकती है, सो दिस इज हाई रिस्क कंपनी। ओके, लेकिन आपको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। मतलब आपके 100 का जो है वो 110 भी हो गया तो भी आपको चलेगा, एंड 90 हो गया तो भी आप लॉस इनकर कर लोगे। सो देर इज अ लो रिस्क। ओके, सो इस तरीके से, so this is how the things work. Now, we are going to discuss this solved example first, and then we are going to wrap up today's class. Okay. So, example first is Shamrao's income is 2015-16 after paying all the taxes is 6,40,000. He pays Rs 200 per month for insurance and 20% of his annual income into his provident fund. He puts aside Rs 500 per month for emergencies. How much money does he have for yearly spending? ठीक है, सो अभी जो क्वेश्चंस दिया है उसको हमें एक दो बार रीड करना होता है, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो शामराव का जो इनकम है सारे टैक्सेस पे करने के बाद में वो है, एनुअल इनकम इज 6,40,000 रुपीज, राइट? 6,40,000 रुपीज। सो उनका इंश्योरेंस का प्रीमियम है 2,000 रुपए का पर मंथ, राइट? सो एक साल का कितना हुआ? 2,000 इंटू 12। सी यहाँ पे 2,000 इंटू 12, सो दिस इज 24,000 रुपीज इज द इंश्योरेंस प्रीमियम ईयरली। मतलब एक ईयर का इतना होता है, राइट? नाउ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अभी पीएफ नाम का एक चीज होता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोविडेंट फंड। सो प्रोविडेंट फंड में 20% जाता है। नाउ दिस इज 20% इनटू 6,40,000, सो दैट कम्स 1,28,000। मतलब 6,40,000 में से 1,28,000 प्रोविडेंट फंड में जाता है। Okay, so these funds can be used later on, but for now they are saved separately. Okay, so fourth point we have is amount put aside for emergency is 500 into
12 that is 6,000 रुपीज मतलब 500 रुपए पर मंथ इमरजेंसीज के लिए शामराव बाहर निकालते हैं या फिर दे कीप इट सेपरेट. ओके, और ही कीप्स इट सेपरेट. सो 6,000 रुपीज ये गया. नाउ सी, टोटल इनकम था इतना, राइट उसमें से 24,000 गया इंश्योरेंस प्रीमियम का, 1,28,000 गया प्रोविडेंट फंड का, और 6,000 रुपया गया किस चीज का, इमरजेंसी इमरजेंसी फंड्स का, राइट. सो टोटल प्लान एक्सपेंडिचर्स मतलब कि उन्होंने प्लान किए हुए एक्सपेंडिचर कितना है, 24,000 प्लस 1,28,000 प्लस 6,000. सो इट इज अप्रोक्सीमेटली और इट इज एग्जैक्टली 1,58,000 रुपीज. ठीक है, सो इतना ये जो है ये प्लान एक्सपेंडिचर हुआ उनका शामराव का. नाउ अमाउंट अवेलेबल फॉर ईयरली एक्सपेंसेस. सो अभी उनका जो इनकम था वो था 6,40,000. उसमें से अगर 1,58,000 रुपीज सब्ट्रैक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है, सो कितना बचेगा, इट इज 4,82,000. ठीक है, मतलब 4,82,000 या किंवा 4,82,000 रुपये त्यांना उरतात फॉर yearly expenses. Okay, so this is how we are going to work, or we are going to solve examples in this chapter. Okay, so I hope students you were able to understand whatever I have taught you. And today we are going to wrap up our class a bit early because I have another assignment. Okay, I hope you understand that. And my request to everyone is to attend the classes regularly. Don't miss the class. If you have any kind of doubt or any kind of difficulty in joining or anything about related to classes, you can always reach out to me or Vaishali madam. Yeah. So bye bye students. Good night. Take care and I will see you next time. Bye bye.